Students, so welcome to your class. So we will do our remaining questions of mirror image. We had done already 20 questions. Okay, so today we are going to do further. We'll try to do 20 more questions today. So first is your this is your word. You know that you have to consider that our mirror is placed at the right side. So answer will be A will be same, U will be same small, G will be like this, and A will be like this, R will be like this, again A will be like this, C will be like this, I and N will be like this. So see in your which answer it is already wrong, it is already wrong, it is already wrong, and in second letter only we found that this one is your right answer, D is your right answer. Next is your simple capital letter is there, like 6 will be like this, 7 and 4 will be like this, 8 will be same, V will remain same, and B will be like this, and D will be like this. So see in which answer it is. So these two are already incorrect because 8 and 6 are remains same. First is 6. So in this we can have C option is correct because 7 is water image is given of 7. So we have to find out the mirror image. So answer is C. Next is your 23. Here we can have 6 like this, H, 5 like this, P like this, 4 like this, S will be like this, 3 will be like this, and T will remain same. Now see in which answer it is. यहाँ तो हमें we have the first only 6 को देखकर ही we found the answer in D. Need not to solve it completely. So we found the answer in D. Now in 24 we will have 2 like this, 1 will be like this, Q will be like this. See अगर आपको यहीं से आंसर मिल रहा हो तो it is wrong, it is correct. So we need not to solve it further. B is the right answer. Okay. So this is called option elimination method. If you eliminate the method from the first letter, it took time, but whenever you practice for that ना, it goes on the speed. मतलब फटाफट कर लेंगे अगर आप ऑब्जेक्ट एलिमिनेशन करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन. So फटाफट you can have the answer like A and 4. See it is also wrong, A and 4 is in A and C. Now we will have 1 is same in both, 0 will remain same, 1 is same, N will be like this, दोनों ऑप्शन में सेम है, I हमारा दोनों ऑप्शन में सेम है, A is same in both, R is same, A is same. लास्ट में देखो we have T, so here it is L is given, so option number D is your correct answer. So if you are practicing now, you will see the first letter at the last directly you can see, and you can have the answer right now. Means every student is having on aspect of seeing the things. So one can have the last letter firstly he will see the first last letter, so usko to first option में answer will be cleared. Next is your 26. K will be like this, C option B is already out, A is same, then P is same in all, O is same, D देखो ये ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट ये ऑप्शन इनकरेक्ट, the answer will be A option. So in 4 letters only we found the answer as A. Next is your Malayalam is written, see here straight Malayalam, straight M is given, यहाँ पर आपकी water image है, C is incorrect, M A will remain same, L हमारा उल्टा होगा तो यहाँ है ये ऑप्शन भी करेक्ट, यहाँ पर आपकी water image given है तो आंसर will be your B. We need not to solve a single letter. ठीक है, जो लेटर सेम रहेंगे उनको हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है. We have to just go and quickly check. E will be like this, so this option is already eliminated. At last also we want E, इन दोनों में E है, in all three it is. F will be like this, so it is also incorrect, it is answer will be this. Okay.
So F solve करते ही we got the answer as C. 29, H will remain same, K will like this. It is already incorrect. It is already incorrect. Next we will go for 6. Y will remain same, F like this. This is water image is given, so answer will be D. Okay, got it? Next question, यहाँ पर 3 will be like this. So it is already incorrect. G will be like this. It is already incorrect. It is already incorrect. Answer will be your B option. So in the starting only we found the answer. We need not to solve it in different manners. All the option need not to be solved. Directly we can have the answers, right? So do you practice for at least 50 questions for each topic, and you will be masters in that. R, O, S will be like this. So R, O, this is wrong. This is wrong because R will be there, and answer is correct. In first option only we had found magazine. N, Z will be like this. C, M is given, M is given, wrong. E, I is given, na? Sorry, I will be covered here, and Z, I, Z. तो Z यहाँ पे straight दिया हो, ये भी incorrect हो गया, means D option is correct answer. ठीक है. In question number 33, you will find 8 will be C, 2 will be like this, 7 will be like this, and 4 will be like this. G will be like this, C will be like this, 9 will be like this. So we found यहाँ पर ये देखो water image है L की, ये नहीं होगा. So we will check the other option. So answer will be your answer will be like this, because here water image is given, so answer will be C. Next is your Kutubgarh. Kutubgarh C, H will be like this, R will be like this. See, यहाँ से click cancelled, here it is cancelled, H is fine, not fine here, so means answer will be your D. In 2 letters only we found it. R will be like this, this option already eliminated. U will be like this, so this option is already eliminated. Now we will find 7. We will write P, यहाँ पर water image given है, so answer will be your C. ठीक है. So quickly we can find the answers. Now some picture based questions are there. Like अब यहाँ पर we have to draw a picture like this. यहाँ पर देखो small is there, यहाँ पर capital is there. Sorry, we are drawn wrong. यहाँ पर ऐसे होगा, ये छोटा आएगा, and then we will have like this, long, like this. We had like this. We need to have image. We are having this image we found in our D option, so answer will be your D. Okay, now get back to our 37 question. See, फर्स्टली फील्ड वाला देख लो. फील्ड वाला हमारा अगर यहाँ होगा तो हमारा लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहाँ ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, आंसर विल बी डी. ओके, बहुत क्विकली हम कर सकते हैं. यहाँ पर इस इन दिस वॉच 2 और 3 के बीच में है, तो वहाँ पर आपकी 9 और 10 के बीच में होगी स्मॉल, जो सॉरी हमारी मिनट्स हैंड है, तो वो ये यहाँ पर दिख रही है हमें और किसी में भी नहीं है, सो आंसर विल बी योर डी. ओके, इन 39 क्वेश्चन सी, इमेज बना लेते हैं. वी विल हैव दिस काइंड ऑफ इमेज ये वाली होगी, एंड वी विल हैव दिस यहाँ पर होगा. तो ये हमें मिल रहा है कहाँ पर, वी आर फाउंडिंग दिस इन आर सी ऑप्शन, तो आंसर विल बी सी. 40 में देखो सी, हमारा एरो यहाँ आएगा, एरो यहाँ आएगा, तो यहाँ पर एरो नहीं है, यहाँ ऊपर नहीं है, इन दोनों में है. नाउ वी हैव टू सी, ये जो छोटा सा है ये आपका उस साइड टर्न होके यहाँ आएगा, राइट साइड में हो जाएगा. लेफ्ट साइड में फेस है उसका, राइट साइड में हो जाएगा. आंसर विल बी सी. ओके, वेरी क्विकली 6 विल बी रिवर्स इन 9 में हो जाएगा लाइक दिस, सॉरी 9 नहीं, ऐसा हो जाएगा 6, सो इट इज़ नॉट सो. ये भी नहीं है. इन दोनों में देखो अब लाइन्स आर वर्टिकल इन द
मेन इमेज. So we will have the main image vertically line रहेंगी, वो horizontal में चेंज नहीं होगी, the answer will be B. Okay, next is your this question. Now this देखो, if it is in right side तो ये left side में आ जाएगा आपका, this is in left side तो ये right side में आ जाएगा. So same thing we will have to find, यहाँ wrong, यहाँ wrong, यहाँ wrong, answer will be your B. See in 43 the sun will be seen at right side, तो ये ऑप्शन यही एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट, जहाँ आपका सन है उसके नीचे हैंड है, उसके नीचे हैंड है, तो यहाँ इसका डाउन में है, इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज डाउन में, स्ट्रेट हैंड इज देयर ना, सो आंसर विल बी योर डी. ओके, सो क्विकली वी हैव टू डू लाइक दिस. अब यहाँ देखो, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को फर्स्ट सी, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये आपका राइट साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, it is not given in your, wait, I think options are given wrong in this, let me check. So I checked, the options are given wrong in this, so we will leave it this question. Next question we will see. यहाँ पर देखो, सेम हेक्सागन वी हैव टू ड्रॉ. ओके, इट इज़ डिवाइडेड फर्दर, जो ब्लैक फिल्ड पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा. सो चेक इट हेयर ओनली, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, सो ऑप्शन बी या डी होगा हमारा आंसर. ओके, नाउ चेक द ग्रे पोर्शन. अगर ग्रे पोर्शन चेक करें तो इट इज़ बोथ सेम इन बोथ. उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ग्रे, ये हमारा दैट विल कम इन राइट साइड में आएगा. सो बोथ ऑप्शन, ओ इन बुक इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बोथ क्वेश्चन ऑप्शंस आर सेम. No, both options are not same. See, in main figure we are having horizontal lines both. ये दोनों जो grey portion है, इन दोनों में horizontal lines हैं. But in options we are having vertical lines in D option. So option D is incorrect. Answer will be option number B. Okay. Question number 46. It is given in left, तो ये right में आएगा. इसके नीचे क्रॉस आएगा. C कहाँ पर है? It is wrong. इन दोनों में है. विद नेक्स्ट, जो ये आपका रोम्बस है, इट विल कम दिस साइड, यहाँ पर होगा, देन यहाँ पर होगा, यहाँ पर. ये किस में, टू लाइन्स है यहाँ पर 2 लाइन्स है, बट यहाँ सिंगल लाइन है. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट गो टू योर 47th क्वेश्चन. नाउ बॉक्स इज देयर, बॉक्स है यहाँ पर, सिर्फ ऑल्टरनेट बॉक्स में क्रॉस का साइन है. सो ये तो यहाँ से देखने से ही रॉन्ग हो गए, ये भी रॉन्ग हो गया. आंसर विल बी योर डी. We need not to solve, we got the answer. 49 क्वेश्चन हम रहने देते हैं बिकॉज ऑप्शंस आर इन डिफरेंट पेज. नाउ वी विल सी 49. देखो, ये फिल्ड सर्कल यहाँ आएगा, सो इट इज़ देयर इन दिस, नॉट इन दिस, नॉट इन दिस. सो आंसर ए, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. सी, यहाँ पर आपका 2 सर्कल होंगे, ऑल 4 ऑप्शंस आर हैविंग 2 सर्कल्स. We will have this semicircle at the left side. So semicircle 1 the left side, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा. और उसके सेमीसर्कल के साथ साथ we will have triangle. So यहाँ स्क्वायर है, यहाँ नहीं है. In both these are square, but down triangle we want, because यहाँ पर भी down triangle. So option B is also eliminated. Option D is your answer. Okay, so quickly we need to solve it because we are having some subjective questions also. जो subject related questions होते हैं, we need to give time to them also. So reasoning questions को जितना practice करोगे उतनी quickly ये solve होते जाएंगे. And thanks for watching. We have done 30 questions today in just 15 minutes. So see the speed. We have to do like this because in exams only maximum to maximum we get 44 to 45 seconds for one question, and if we spare our time from these type of questions, reasoning questions, GK questions, so we can devote that time in your subject related questions. Okay, thanks for watching. Please keep learning.